Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with a new chapter, chapter number 7 of our NCERT book of class 6th. So the name of this chapter is Fractions. Okay, so fractions, exercise 7.1 is on page number 135 of our NCERT book. Alright, so now we are starting with exercise 7.1, fractions. Exercise 7.1, question number 1 says, write the fraction representing the shaded portion. Write the fraction representing the shaded portion. So we have to write the fraction that is representing the shaded portion, and the first part is something like this. Alright, and the shaded portion is this. Okay, so this is the first part. So now we have to write the fraction. How do we write the fraction, children? Okay, so now I think the board is more clear. So how we write the fraction? देखो, जितने total parts हमारे पास given होते हैं, that will be written in the denominator. Numerator and denominator, there are two types in a fraction. एक होता है numerator and एक होता है denominator. ठीक है? So if I write 4/5, ठीक है? So 4 is the numerator and 5 is the denominator. Numerator जो ऊपर लिखा जाता है fraction में and denominator जो नीचे लिखा जाता है fraction में, right? Fraction is always in the form of p/q. ऐसी ही होती है. If we say 10/2 or we say 5/17 or we say 20/100, तो ये सब क्या है? In the form of fraction. जिसमें numerator और denominator present होगा वो होगी fraction. ठीक है? So यहाँ पे भी 4/5 था. 4 is the numerator, 5 is the denominator. अब हमें यहाँ पे भी एक ऐसा ही fraction बताना है. So for that, जो total number of parts होंगे that will be written in the denominator and जो shaded parts होंगे that will be written in the numerator. ठीक है? Like in this figure, the total number of parts are 1, 2, 3, 4. Total 4 parts हैं, तो आप एक line draw करके नीचे तो आप 4 यहाँ पे लिख सकते हो. Now ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? that will be the shaded part. अब इसमें shaded part क्या है? 1 and 2. Only 2 shaded parts are there. It means 2/4. इसका मतलब क्या है? 4 में से 2 parts shaded है. ठीक है? 4 में से 2 parts shaded है. So 2/4. Okay? So fraction ऐसे form होती है. So the question was write the fraction representing the shaded portion. तो वो fraction हमने लिख दी. So for that children, total number of parts जितने भी होंगे that will be written in the denominator and जो numerator में होगा वो होगा shaded portion. ठीक है? Shaded portion upon total number of parts. ठीक है? So upon का sign है ये, एक line डाल के हम एक fraction बना देते हैं. So 2 is the numerator and 4 is the denominator. All right? So this was first part. Now let's draw the second part.
Shall I rub this part? You can note this down in your notes as well. So this is the figure of part number 2. And इसमें से shaded कितने parts है? Let's check. Alright. Almost सारे parts shaded हैं. So now we have to write the fraction of this part. So अब इसमें we all know that total number of parts will be written. So this shaded portion is not visible. Doesn't matter, हम black से shade कर देते हैं यहाँ पे. So now is it visible? All right, yes. So अब हम second part solve कर रहे हैं and in second part we know that total number of parts will be written in the denominator. Like इधर भी हमने total number of parts लिखे थे denominator में and numerator में just the shaded parts. So similarly यहाँ पे भी total number of parts कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Don't forget to take this part also because total number of parts में तो unshaded region भी आएगा. So total 9 पार्ट्स हैं तो हमने अपॉन वाला साइन डाल के 9 लिख दिया. अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? इन द न्यूमरेटर ऊपर क्या लिखना है? फ्रैक्शन में शेडेड पार्ट्स. तो शेडेड पार्ट्स इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 पार्ट शेडेड है 9 में से. सो हमने फ्रैक्शन बना दी 8/9. ठीक है. सो आई होप दीज 2 पार्ट्स आर क्लियर टू यू. हमें कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट फिगर को ऑब्जर्व करो एंड उसको उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को काउंट कर लो. 1, 2, 3, 4. तो फिर अपॉन में आ गया 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ऊपर क्या आएगा? शेडेड पार्ट्स. 2 पार्ट्स आर शेडेड सो 2/4. सिमिलरली यहाँ पे 8 पार्ट शेडेड है 9 में से, सो 8/9. ऑल्सो चिल्ड्रन इसके लिए क्या कंपल्सरी है कि ये जो सारे पार्ट्स होंगे ये सब इक्वल होंगे. इफ यू विल से कि हमारे पास फिगर ये है और हमने ऐसे पार्ट्स बना दिए, ठीक है, ये हो गए पार्ट्स और हमने इनमें से शेड कर दिया सपोज इसको, इसको और इसको. तो अब आप इसका फ्रैक्शन बताओ. सो यू विल से मैम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो अपॉन 7 एंड शेडेड पार्ट्स है 3. सो 3/7. दिस इज टोटली रॉन्ग. वाई? बिकॉज ये जो हमने बाइफिकेशन किया है, ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये इक्वल नहीं है. कैसे भी कुछ भी कर दिया तो ये फ्रैक्शन नहीं मानी जाएगी. फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड व्हेन वी हैव इक्वल डिविजन ऑफ पार्ट्स. यहाँ पे इक्वली डिवाइड किया हमने 9 पार्ट्स में, यहाँ पे भी 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है तो हमने फ्रैक्शन बना दी है. बट ऐसे कुछ भी डिवाइड करके हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते. ओके. सो दिस वाज आल्सो अ पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझाना जरूरी था. ठीक है. So this was first and second part, children. Please pause the video to note this down. Then we'll be starting with our third part. Okay, so now third and fourth part start करते हैं. So the third part says, okay, so balls are drawn in third part. So we have
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. एंड देन वी हैव 1. तो ये हमारे पास बॉल्स हैं. एंड शेडेड बॉल्स कितनी है इसमें से? दिस वन, this one, this one, and this one. So this is the third part. ठीक है. इसमें हमारे पास कुछ बॉल्स गिवन है. सो वी हैव कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स एंड उसमें से कुछ शेडेड बॉल्स भी गिवन है. अगेन वी हैव टू फाइंड दी फ्रैक्शन. सो फॉर फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? शेडेड नंबर ऑफ बॉल्स. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो इट मीन्स नीचे आएगा 8, राइट. एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? शेडेड नंबर ऑफ बॉल. सो 1 2 3 4. सो दिस इज 4/8. फ्रैक्शन बन गई 4/8. ओके. सो आई होप थर्ड पार्ट इज क्लियर नाउ. अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं. सो लेट्स ड्रॉ and then we have and then we have so now we have to, and the shaded part is देखो now see, so this is part 4, right? So now we can see a circle, and in that circle this zigzag line and this zigzag line is dividing this circle into 4 equal parts. बट बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी है कि उसका कोई यूज भी नहीं है, और उससे ये मत समझना कि अब इसके पार्ट्स बढ़ गए. लाइक some children will say that मैम अब इसके पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6. नो, 6 पार्ट्स इसके नहीं है. वाई? बिकॉज ये जो 2 पार्ट्स हैं ये इक्वल नहीं है. अगर आप इस लाइन को इग्नोर कर देंगे तो ये जो जिगजैग 2 लाइंस हैं ये 4 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर रही है, और ये वही 4 पार्ट्स हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये एक्स्ट्रा है. ये ऐसा नहीं है कि इसने ये भी 2 पार्ट्स बना दिए. नो, यू हैव टू इग्नोर दिस लाइन. ठीक है. एंड पोर्शन जो यहाँ पे शेडेड है वो 2 पोर्शन शेडेड नहीं है, जस्ट एक सिंगल पोर्शन शेडेड है, राइट. इफ वी इग्नोर दिस स्ट्रेट लाइन तो ये 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है. सो टोटल पार्ट्स 4, शेडेड पार्ट 1. सो 1/4 इज दी फ्रैक्शन. ये वाली जो लाइन है ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन है कि बच्चे इसको काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 6 में से 2, तो 2/6. नो, ठीक है. दिस इज 1/4 बिकॉज ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा गिवन है. दिस इज नॉट डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स. ये अनइक्वल कर रही है इसे. ठीक है. सो इग्नोर दिस लाइन एंड देन ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एंड 1 पार्ट इज शेडेड, सो 1/4. Okay, so I hope third and fourth part are clear to you. Please pause the video to note this down. Alright, so this was third and fourth part. I hope these parts are clear to you. Now we are starting with the fifth part.
fourth part is clear to you. Let's now come to part 5. So fifth part में जो हमारे पास figure given है that is like this. So this is the figure. Now we have to shade the region. कौन सा region shaded है इसमें? This one, and this one. So now we have to write the fraction. Sixth part भी draw कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे. So the sixth part is okay. Flowers बने हुए हैं इसमें. And it is like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's draw the flowers. जल्दी जल्दी से. So this is part 6. So now we'll be solving with fifth and sixth part. Okay. So and shaded parts इसमें है. Okay. So I'm shading like this. Alright, coming to fifth part. In fifth part, total number of boxes हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we know that in the denominator we'll be writing 7. And numerator में हमारे पास आएंगे shaded region. So that is 1, 2 and 3. So 3/7 is the required fraction. ठीक है? Fifth part done. Sixth part में हमारे पास है flowers. So total number of flowers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So we know that in the denominator we'll be writing 12. 1 to 12. And numerator में हमारे पास क्या आएगा? A number of shaded parts. So shaded part अब ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. No. एक पूरे फ्लावर को हमने 1 काउंट किया है, 1 पार्ट काउंट किया है. सो 3 पार्ट्स फ्रॉम 1 पार्ट इज 3 पार्ट्स फ्रॉम 12 पार्ट्स इज शेडेड. ठीक है, 12 में से 3 पार्ट शेडेड हैं. सो 3/12. ओके, सो आई होप फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट आर क्लियर टू यू. फिफ्थ पार्ट में 3 पार्ट शेडेड थे 7 में से. सो 3/7. फोर्थ पार्ट में 3 फ्लावर्स शेडेड थे फ्रॉम 12 फ्लावर्स. सो 3/12. Okay, so fifth and sixth part are clear. Please pause the video to note this down. Then we'll be moving further. So now 7th and 8th part. Seventh part में pencils are drawn, right? Yes.
Okay. Like this. One, two, three, four, five. Six, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 पेंसिल्स हमें गिवन है एंड शेडेड रीजन इज 1, 2, 3, 4, 5. So basically children, all the pencils are shaded. Okay, so yes. So this is 7th part. This is 8th part. And 8th part mein it's given like this. So like this and like this. ठीक है, and shaded region is 1, 2, 3, 4. So it is ऐसा and like this. So this is the shaded region. All right. So 7th and 8th part की figure clear है. अब हम इसके fraction को represent करते हैं. So 7th part में we are given pencils and how many pencils are there total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So total 10 pencils we have, and from those 10 pencils all the 10 pencils are shaded. So 10 upon 10 is the required fraction. So I hope 7th part भी clear है. जितने भी number जितने भी shaded pencils हैं उन सबको लिखेंगे. So that's why 10 upon 10 because all are shaded. 10 on 10. 8th part में जो triangle हमें given है उसके कितने parts हैं? First let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 parts हैं. And from those 9 parts, shaded parts are 1, 2, 3 and 4. So 4 upon 9. I hope अब तो बहुत clear होगा fraction को हम कैसे represent करते हैं when we are given figures. ठीक है? So 7th and 8th part are done. Please pause the video to note this down. Then 9th and 10th last part we will discuss. Okay, so last 2 parts are left now. Ninth and 10th part. Ninth part.
सो दिस इज 9th पार्ट, जिसमें यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट है एंड शेडेड पोर्शंस हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एंड 10th पार्ट है हमारे पास like this, like this, like this. So these are the 9th and the 10th part. अब 9th part की अगर हम बात करें, so let's count total number of leaves that we have. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. टोटल 8 लीव्स हैं हमारे पास। उसमें से शेडेड कितनी है, चलो पहले टोटल लिख लेते हैं, अपॉन 8। शेडेड कितनी है, 1 2 3 4, so 4 upon 8 is the required fraction. Very easy, just count the total number of parts and then take the shaded ones. 10th पार्ट में हमारे पास एक ऐसे फिगर गिवन है, इट्स काइंड ऑफ बटरफ्लाई एंड वी कैन से। सो हमें अब इसमें, अब आप बोलोगे मैम ये तो इक्वल पार्ट्स है ही नहीं, ये अलग है, दिस इज जिससे ये दोनों सेम है, जैसे ऐसे ये दोनों सेम है, बट ये दोनों तो सेम नहीं है, ये छोटा पार्ट है, दिस इज बिगर वन, ऐसे ये दोनों भी सेपरेट डिफरेंट है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। जो बीच में लाइन गिवन है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही रही है, सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स उसको हम 2 ही रखते हैं एंड उसमें से 1/2 शेडेड है, सो 1/2, राइट। देखो ये टोटल, ये एक पूरा इमेज है एनिमल का, बीच में से कट हुआ है, मतलब इधर हाफ है उधर हाफ है, सो टोटल 2 पार्ट्स, उसमें से हाफ पार्ट शेडेड है, सो 1/2। 1 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड नहीं है, सो 1/2। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 है। अब हम सेपरेटली इनको काउंट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। आई टोल्ड यू फ्रैक्शन शुड बी, पार्ट्स शुड बी इक्वल, जब भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स अनइक्वल थे सारे, सो हमने 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया इसे। All right, so this is an important part as well. So with this we have completed question number 1, children. 9th and 10th part are done. Please pause the video to note this down. All right, I hope you have written each and every part. आपने अच्छे से समझ लिया है. So now this was the last part. With this we have completed our question number 1. So stay tuned to my next video for the next question. That is question number 2. I'll be coming up very soon. Stay tuned and practice more and more questions of these types. Thank you.